So after discussing this much about memory forensics, the importance of memory forensics, let us look at some of the main tools which are used in memory forensics. Few of these tools are Volatility, Sense Investigation Forensic Toolkit, also known as SIFT, then NCAS Forensic Tool, Plainsight Forensic Toolkit, FireEye Redline Toolkit. इसके अलावा भी कई मेमोरी फोरेंसिक एनालिसिस के टूल्स अवेलेबल हैं। इनमें से कुछ ओपन सोर्स टूल्स हैं और कुछ कमर्शियल टूल्स हैं, पर सभी मेमोरी इमेज एनालिसिस में हेल्प करते हैं। वन ऑफ द commonly known tools out of these tools, which is used by academia, researchers, and also industry experts, is volatility. This tool is created by a computer scientist, Aaron Walters. Volatility is basically a Python-based open source tool which is a collection of plugins. These plugins allow the examination of memory image. इन plugins की हेल्प से हम कई तरह की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन अबाउट रनिंग प्रोसेसेस, ओपन नेटवर्क सॉकेट्स, open network connections, DLLs loaded for each process, cached registry entries, process IDs, and many more. It supports a wide variety of input file format. इसका मतलब ये है कि अगर हमने मेमोरी की इमेज को किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मेट में कैप्चर किया है, तो वोलेटिलिटी की हेल्प से हम उन सभी फॉर्मेट्स का एनालिसिस कर सकते हैं। वोलेटिलिटी काफी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि विंडोज, Linux, and Mac operating system. So soon we will see the demo of analysis of memory image using the volatility framework. So before going to that demo part, we will first have a look at job opportunities which are available after being expert of digital forensics. So this field opens up a wide range of job opportunities for a person. Some of these are computer forensic
investigator, computer forensic technician, computer forensic analyst, digital forensic manager, digital forensic consultant, digital forensic and incident response consultant. In short, we can say that digital forensic expert has vast scope for the job.